Hello everyone, welcome to OASHUB. This is the 1st of February 2024. Budget session is going on in the parliament, and we are here to discuss and I am here to discuss the what are the outcomes of the budget and the key features of the budget. So let's go through the key features of the budget of 2024. So this would be the budget for the 2024 and the 2025. This budget, we are going through the summary of the budget already out there. So this budget is having so much of the things that would be required for your examination and overall to know the economy of your nation, how that is performing. So in this budget, let's go through the summary of the budget. What are the key features is been there. So let's go through quick, have a revision. 2024 budget, obviously आम जानी कि द बजेट 2024 आमको दरकार हम कारण ये ओपीएससी मेन्स अच्छी जेहेतु ओपीएससी मेन्स अच्छी से आमको बहुत ही जरूरी आमपाई तो बजेट 2024 जी आम देखा फास्ट तुम जो अच्छी विकसित भारत बाय 2047 ना विकसित भारत @ 2047 अर्थात हूँ कौन कि एक्सपेक्टेड कराऊँ बजेट 2024 2025 कह कथा कि the vision of India. What is the vision? The vision of India is this one. So this one you can write in essay. is a vision कौन बर्तमान गवर्नमेंट vision कौन vision of India जोटा को तुम essay रे लिखि पारिबो. That is the prosperous Bharat in harmony with nature. This is very important. Prosperous Bharat in harmony with nature, modern infrastructure and opportunity to all. This is very important line. One of the very fast line of the budget I am going through, and that will be the essence जो कि हम देखा the summary of the budget 2024. ये बहुत बढ़िया lines लिखे जी. That is the prosperous Bharat. That means आमे भारत को by 2047 we are going to see our India, the beloved mother country, that would be a developed nation at the rate 2047. कारण इंडिया को 100 वर्ष पूरी जीव कि that means that day we will mark the 100 years of our independence. So that is why we are having that vision कि by 2047 we will be prosperous. हमें prosperous है जीवा and भारत in harmony with nature. That means हमें nature को मध्य कौन करिबा हमें हमर जो nature अछि नेचर को मध्य हमें हार्मनी नेचर को मध्य हमें किसी खेती करिबा नहीं बा जाको हमें कहबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जदि मु कहि परिबी. I would better to say the sustainable development will be there. The modern day infrastructure will be there. Modern day infrastructure चाहे से तमें कही परियो कि एविएशन सेक्टर कथा नहीं जो बायोटेक्नोलॉजी कथा नहीं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कथा नहीं जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कथा नहीं जो एंड द अपॉर्चुनिटी टू ऑल रहिबो बोली कहउचंती हमर बजेट कहा कथा इवन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मध्य कहउचंती डेवलपमेंटर मंत्र कोन ताहले ये तो हमें देखिए विजन देन मंत्र ऑफ डेवलपमेंट कौन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र ऑफ डेवलपमेंट दैट इज द ट्रायो व्हाट सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास ताले मंत्र रे कौन रहिबो ना दैट इज द व्हाट सबके साथ सबका विकास. सो दिस इज व्हाट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पीपल्स पार्टिसिपेशन सबका साथ मीन्स व्हाट everybody we will have cooperation. Let to have the cooperation. That is what cooperation means. Federalism, or I will say what federalism, cooperation, cooperative governance, federalism and sustainable development. And what it will be sustainable development. So सबके साथ सबके विकास these are the key words जोटा को हमें मन रखा पड़ेगा. When I say सबके साथ, that means the cooperative cooperation from the all section. सबका विकास means what? Inclusive. सबका विकास means what? Inclusive growth. Inclusive growth. That will lead to inclusive development. That will lead to what? Inclusive development. सो सबके साथ सबका विकास सबका भरोसा विश्वास जोटा हम कहबा ट्रिनिटी ऑफ दैट इज द डेमोग्राफी एंड द डेमोक्रेसी दैट मीन्स ये तो हमें देखिदेले तो एथर ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी रे आसबो डेमोक्रेसी देन आसबो तुमर डाइवर्सिटी एंड बैक्ड बाय द दैट इज बट सबका प्रयास. सो दैट मीन्स हमें कहबा ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी हम कहबा
द डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी ताले आमे कहबा द डेमोग्राफी डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी ये आम पाखरे अच्छी आम पाखरे डाइवर्सिटी अच्छी आम पाखरे डेमोग्राफी अच्छी आम पाखरे डेमोक्रेसी अच्छी दैट इज बैक्ड बाय व्हाट सबका प्रयास समस्त चेष्टा करते ये जो की वर्ड सब लिखाई ना ये बहुत बढ़िया की वर्ड जहाँ तुम निज आंसर लिखिपर निजर डे टू डे मतलब ये आम यूज कर खास कर जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन कर यूज करें सो जदि आम देखा दैट मीन्स ये तुम कहीपर कि डेमोग्राफी आम पाखे अच्छी कहीं आम जाने कि इन इंडिया दैट इज द 15 to 65 इयर्स जो पॉपुलेशन जो अच्छी दैट इज 60%. सो आम पाखे डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छी डेमोग्राफिक विंडो एज वेल we are having demographic window, we are having demographic dividend as well. So both आम पाखे dividend जो अच्छी window is also there. So ये रहिबो. So that means आमे कौन ना आमर चेष्टा कौन by 2047 India would be developed. That would be the objective, the vision for India. People centric inclusive growth रे जदि आमे देखिबा एथिरे कुहा जाउची कि that will be substantive development of all form of infrastructure, physical, digital and the social. So that means हमें जितने हमें inclusive development कथा कहिबा there here we are focusing, that means the government is focusing substantive development all the front, all infrastructure, digital and the social forms रे development कथा कहउचंती सेमती digital public infrastructure मध्ये DPI promoted formalizations and the financial inclusion. This is very important. ये जो हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहूचे लाइक तमें आधार कथा नहीं चाहो लाइक तमें लाइक आम कह वाईफाई कथा नहीं चाहो है ना ये तुम देख आधार कथा नहीं चाहो मोबाइल कथा नहीं चाहो तुम्हें है ना जन आधार कथा तुम्हें नहीं चाहो मोबाइल कथा नहीं चाहो कि आमर जो यूपीआई कथा नहीं चाहो दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स व्हाट simple digital public infrastructure means the infrastructure which is being used by the public like UPI like banking, that is the public infrastructure banking UPI, let's say mobile. So these are the public infrastructure jaha ko hame koche they are coming of the digital public infrastructure. Okay, तो आपको हमें formalization करते promoted formalization and the financial inclusion so that DPI will lead to the financial inclusion like the DBT, like you may say the DBT direct benefit transfer that is possible through the JAM, that is possible through the JAM Jan Aadhaar and mobile या द्वारा possible है जी. Okay, तो ये digital infrastructure government also trying to promote the digital infrastructure. Then deepening and widening the tax base via the GST. So GST ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି that is the ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ is a what service tax. GST ହେଉଛି କ'ଣ one nation one tax or the tax what ଆମେ କହିବା end tax ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା that is the end tax ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା GST. ତ GST ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ service tax ହେଇଛି one nation one tax ପାଇଁ. So deepening and widening the tax base. तो ये भी कौन मतलब टैक्स रे जो बेसटा बढ़ी जाइए बेस अर्थात कौन सपोज आगे आम के पास हजारे लोक टैक्स दौले ओके नाउ देयर इज व्हाट लेट्स से 1 crore people they are paying the tax. So the base of the tax payer has gone up. So that means एथरे से कहउछंती deepening and widening of the tax base. तो टैक्स बेस जदि बढ़ी जीवो तो obviously collection बढ़िबो. So that would be also important. Okay, नहीं तेणु करके आम कहबा strengthening the financial sector brought saving credit and investment back on track. तो बर्तमान कौन जो कोविड-19 पर जदि आम देखा जो फाइनेंशियल सिचुएशन थिला दैट फाइनेंशियल सिचुएशन आम कहबा कि ये आम देश में टिके वीक हो जाइतिला जीएसटी वगैरह जदि तुम देखियो ये कलेक्शन एते नथिला and the GDP was not performing well. समस्ते कहले कि COVID-19 has weakened the world economy, but सबुठ important कथा है the India's economy stays strong. Indian economy is back on track and also going slow. That is the 7.3, 7.5 Indian economy is growing. That means average. That means हमें कहबा जो international average अछि बा world economy growth रो जो average अछि ताटू Indian economy is performing well. That is why Indian economy को हमें कहचे कि व्हाट ब्राइट स्पॉट आम कहे से कहे है ना कोविड एरा आम कह पोस्ट कोविड ब्राइट स्पॉट ऑफ इकोनॉमी जी वर्ल्ड थे दैट इज द इंडियन इकोनॉमी सेविंग लोक मैंने करवा करुच्ची क्रेडिट एंड ये सब आसीगला
Gift. IFSC, a robust gateway for the global capital and the financial services for the economy. Obviously, tamane gift city kotha padhithibo. Okay, so now that is what আমি কেবা কি গিফট সিটি কথা নেই যাও তো ফিনান্সিয়াল जो আমি কেবা activities, okay, financial global financial activities is going on in India. So financial activities, global financial activities is now global is heading towards India. The content ke jodi amo pakhare hochi world to 18% population and your economy is going 7 that means 0.3 7.5 or plus I would say. तो जदि ग्रो करूची ताले वाई नॉट तो मतलब आम कहवा कि जो दुनिया कहीं आमको देखिबनी बिकज आम पाखे डेमोग्राफी डिपेंडेंट अच्छी आम पाखे एवरीथिंग वी आर हैविंग दैट इज वाई प्रेजेंट एरा इज द एरा ऑफ एशियन टाइम हमें आपको कहे एशियन टाइम China has also ruled and also ruling. So we are also coming forward. We are also hoping to have at least 5 trillion, 7 trillion economy within 2-3 years. मुझे टारगेट गवर्नमेंट नौ कि by 2030 एटलिस्ट हमें 7-10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करिया पड़िबो हमको मध्य. देन प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट जदि हमें कहबा कहना इन्फ्लेशन जोटा कोविड टाइम रे दोज इन्फ्लेशन दैट वाज इंक्रीज्ड. So we are also focusing to manage on the that would be what आम जोटा कहबा कि इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन को मध्य गवर्नमेंट कहया कथा कि वी हैव केप्ट द इन्फ्लेशन विद इन आवर टारगेट लिमिट. जो टारगेट लिमिट थिले ताको हमें कौन करूचे वी आर कंट्रोलिंग दैट वन प्रोएक्टिव मैनेजमेंट करूचे. सो हियर यू कैन सी the GDP growth of the world and GDP growth of India. So that means GDP growth India hochi ame keba world to upare ochi but average GDP growth we are having more. Apart from that, country is becoming an active participant in economic growth as well. तो आमे आम कंट्री बर्तमान कौन होची ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री सबुठ इंपोर्टेंट कथा है ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आगुरु कौन होता ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूज टू कॉन्सेंट्रेटेड इन सम पर्टिकुलर प्लेसेस. ओके, so there was no inclusive economic growth. Inclusive economic growth ही पारु नथिला. So some economic growth poles थिला. That means आमे जाको कहूचे कि growth poles. So growth poles आमे कहबा जेमती बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, these are the some important growth poles. They were propelling the economic growth. And rest of the area, let's say आसाम कथा नहीं जाओ, तुम्हें उड़ीसा कथा नहीं जाओ, झारखंड कथा नहीं जाओ, छत्तीसगढ़ कथा नहीं जाओ, even northeast कथा नहीं जाओ. These हमें पूर्वोदय जाको हमें कुछ ना these economic activities also coming from this area. No doubt this part of India is a developed part of India, the western part. But the eastern part of India also coming forward. So that is why all parts of the economy is becoming active participant in the economic growth. जाको हमें कहबा that is inclusive economic growth. जाको हमें कहबा कौन ना inclusive economic growth. So aspirational district plan अच्छी चाहे से aspirational block कथा नहीं जाओ ना जमती है भी तमें देखो जब मेक इन उड़ीसा कथा नहीं जाओ, मेक इन बंगाल कथा नहीं जाओ, मेक इन आसाम कथा नहीं जाओ. So these competitive हमें कहबा फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. ओके, बोथ हमें तुमको देखिया को मिलेबो. So India and the world trend देखी परिबो तमे that is India is performing budget जति हम देखिबा GDP growth बजेट कही जोटा कि हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करुच्ची. फोकस एरिया में देखा फोकस एरिया हूँ गरीब कल्याण, देश का कल्याण. सो फोकस एरिया द गवर्नमेंट इज फोकसिंग इन दिस पर्टिकुलर बजेट दैट इज द गरीब कल्याण. गरीब कल्याण देश का कल्याण. सो दैट मीन्स ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट डेटा दिखाई तुमको जोटा मेन्स रे बहुत इंपोर्टेंट काम को आसो. और जो मैंने मेन्स लिखुचे तुम मान बहुत इंपोर्टेंट जहाँ जिते मुझे चाहिए सर्ट करने एंड दोज आर ऑल्सो गोइंग टू अपियर फॉर द UPSC prelims coming prelims in the May. That would be also helpful for you as well. The DVT, this is very important to write for the aspirants those who are going to appear for the prelims of the mains, is that the DVT has led to 2.7 lakhs crore. This is huge amount. 2.7 lakhs crores DVT has saved. This is government saying, not I am saying. This is the government words. So as the government, that means budget is reflecting the direct benefit transfer, direct benefit transfer, that means that is through the JAM, जाको हमें ट्रिनिटी कोचे जॉन आधार मोबाइल, दैट्स आर लेड टू 2.7 लाख crore सेविंग. बहुत इंपॉर्टेंट. सो ये सेविंग जो दैट मीन्स रिसोर्स सेविंग होची, लीकेजेस कम होची. 25 crore people have moved out the multi-dimensional poverty index, or that is the poverty. A simple I would say 25
crore people have moved out of the multi-dimensional poverty. 2.7 lakhs crores saving ହେଇଛି. Now credit assistance to 78 lakhs street vendors under the PM Sanman Nidhi. ओके तो ये जो दैट मीन्स स्कीम जो पीएम सम्मान निधि जो करा जाइथिला है ना दैट मीन्स बट सानिधि जाको तुम सानिधि भी कही पारिबो पीएम सानिधि स्कीम तो थ्रू दिस स्कीम जो आमर जो भेंडर्स भाई मैंने एंड द सिस्टर्स एंड द ब्रदर्स वेंडर्स दे हैव गॉट दैट इज 70 लाख्स स्ट्रीट वेंडर्स जो उनको क्रेडिट असिस्टेंस मिली दैट टू बी द 10,000 and somebody is having more than that minimum 10,000 to मिली से कौन दैट मीन्स एम्पावरमेंट ये देखिपर डिक्लाइन ऑफ द हेड काउंट रेशियो नाउ सिंस जदि आम देख डेटा देखा 2005-06 के आमर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनल फोर्स धीरे 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 आसिक के पहुंची देख now as we are in 2022-2023 that percentage of population who are multi-dimensionally poor only 11.3%. This is very necessary for you. 11.3. Okay, 2023. Now comes to the youth power jete ame siba to PM Sri budget allocation. PM Sri budget allocation that means dekho. So budget allocation has increased. So that is what PM Sri budget allocation has increased. This is also very important. Okay. So PM Sri budget allocation that has increased, that is also good sign. And so that what I mean that will lead to what? The school that means जो schooling वगैरह रही पिला मानकु youth मानकु skilling ही परिबो स्कूल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जेते हम स्कूल अच्छी गवर्नमेंट स्कूल अच्छी से तार एम्पावरमेंट ही परिबो तो ये तुम लिखिपर पीएम श्री जो बजेट इवन प्राइम मिनिस्टर निजे मन के बात रे जानते पिला मन सहित कंटाक्ट करती सो पीएम श्री स्कूल्स इज सेंट्रली बट आम कह जो पीएम श्री स्कूल जोटा आम करचे समस्ते जानते सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है तो दैट हैज 6,050 crores दिए ये भी मन रखिपर 1.4 crore यूथ ट्रेन्ड अंडर द स्किल इंडिया मिशन fostering the entrepreneurial aspirations of the youth. 43 crores loans sanctions under the PM Mudra Yojana. So we are also fostering what? We are also fostering the entrepreneurial aspirations of the youth. 43 crores loans has been sanctioned under the PM Mudra Yojana. Then just what that is 1.4 crore youth trained kara jaichi. एम्स केते यूनिवर्सिटीज ये सब डेटा आम टे देखीदे हाउ मेनी एम्स आमर जहाँ सब टिके डेटा ये देखी दियो सो वी आर हैविंग लाइक आईआईटीज कथा जी आम देखा कि 2014 16टा थिला आईआईटीज 16 आईआईटीज थिला ना इट इज 23 आईआईटीज एम्स कथा नहीं जो ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस को जी आम देखा इट वाज 7 थिला नाउ इट्स 22 एम्स इज देयर universities जदि आम देखा 723 universities were there now it's 1113 so that means 1100 almost सब double हवा को बसी so these are the government saying how the education is also improving through this focus area 2 that means the welfare of the farmers that is what annadata जाको हमें कहबा अन्नदाता so in that area here you can see the direct financial assistance to 11.8 crore farmers under the PM Kisan. So PM Kisan under आम देखा केते लोक बेनिफिट्स पाउछंती क्रॉप इंश्योरेंस 4 crore फार्मर क्रॉप्स इंश्योरेंस पाउछंती PM फसल बीमा योजना रे तो ये मध्य आम लिखिपर डेटा आमको जो डेटा डेफिशिएंसी थिला ना मेंस में से डेफिशिएंसी और रहिबो नाही कि जोटा आम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर केते पाउछंती फाइनेंशियल फार्मर्स PM किसान अंडर केते लोक बेनिफिट्स पाइले व्हीट प्रोडक्शन केते बढ़ी राइस प्रोडक्शन देख अच्छा जदि आमे फसल बीमा को प्रमोट कले जदि आमे किसान PM किसान को प्रमोट कले सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन जदि आमे कहबा ऑफ 1361 मंडीज अंडर द ई नाम ओब्वियसली आको आमे पढ़िचे आगे थिला खाली नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट तुम जानछ नाम ना आ पूर्व जो मंडीज गुड़ा अच्छी मंडी तो समझते जानछ ना इट्स ई मंडी अर्थात इलेक्ट्रोलाइज्ड और इलेक्ट्रिकल मंडीज आमे कहबा दैट इज आमे कहबा national electrical market now that means it is supporting trading volume of what 3 lakh crore
3 लाख करोड़ आम देखा तो पीएम किसान कथा नहीं जाओ सो फाइनेंशियल आम कह डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स एमाने बेनिफिट पाइले पीएम किसान रे 4 करोड़ फार्मर पाइले देन आम इंटीग्रेशन ऑफ मंडीज को करदे वीट प्रोडक्शन बढ़ी के देख दैट इज द लाख मेट्रिक टन रे तो दैट इज 38 has increased in between टिके कमी जाइथिला 2023 बट पुनी बढ़ी गला एमएसपी फैक्टर्स जगो नाउ सॉरी राइस प्रोडक्शन सॉरी करेक्ट मी राइट राइस नाउ वीट प्रोडक्शन जदि आम देखा so wheat production has also so that would be from the 2024 this is data of the 2024 and 2022 wheat production केते हेची देखा 262 wheat production कमी छी it used to 319 then 400 that means 2022 रे बढ़ी थिला तापर कमी गेला 180 now wheat production 262 तो wheat production कमी छी जदि हमें प्रीवियस ईयर को देखिबा बढ़ी छी बट ओवरऑल वीट प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड तो ये टिके तुमको ध्यान से देखिया को पड़िबो कारण एठू प्रीलिम रे बा मेंस रे में लिखि परिबा बट राइस प्रोडक्शन हैज गॉन अप राइस प्रोडक्शन बढ़ी जाइछि किंतु एटा कमी जाइछि नारी शक्ति रे देखिया कि दैट मींस वुमेन एम्पावरमेंट केस रे देखो बजट कोन कहउछि राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दैट हैज इंक्रीज बहुत बढ़िया साइंस कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज to 37% ये बढ़िया तुम कही पर ये डेटा वुमेन एम्पावरमेंट जितरो तुम लिखुछ कि जोटा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिया जाइछि जोटा कि मु आउटी पूर्व स्पीच मध्ये सुनुथली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतांकर से मध्ये कहतले कि 30 करोड़ मुद्रा योजना डिसबर्स टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पई दिया जाइछि इंक्रीज इन द फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन केते हेछि देखो in the last 10 years देखो 20% in the last 10 years रे तो वुमेन मानकर जो एनरोलमेंट है सेटा इंक्रीज हो जाइछि बाय व्हाट 28% 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेस हमें कहबा सो दैट हैज आल्सो इंक्रीज के दैट मींस हमें जदि कहबा 43% so overall when I say overall the women participation the women participation in the education has increased so that is the good news is that so like what when I say overall that is the what when I say STEM okay let me this one go through the STEM courses that means like biochemistry engineering computer statistics mathematics medical I would say like मतलब जोटा कि हमारे टेक्निकल कोर्सेस व्हाट टेक्निकल कोर्सेस सो जो टेक्निकल कोर्सेस वहाँ में जाको कोर्सेस स्टेम कोर्सेस है ना दैट इज तो ये दैट हैज इंक्रीज्ड है जी टेक्निकल कोर्सेस रे वुमेन्स मानकर पार्टिसिपेशन इंक्रीज 43% 28% ओवरऑल इंक्रीज है वुमेन एम्पावरमेंट केस रे में लिखि पर 1 crore women assisted 83 lakhs SSG to become the लक्षपति दीदी तो दैट मीन्स लक्षपति दीदी अर्थात कौन जो मैंने एटलिस्ट आम कह 1 लाख इनकम करेंगे वर्ष को ये कौन ना एटलिस्ट इयरली से मैंने 1 लाख इनकम करेंगे ताकू कह जाए लक्षपति दीदी तो 1 crore आम कह वुमेन असिस्टेड ओके बाय व्हाट 1 crore वुमेन ध्यान से मैंने बहुत इंपोर्टेंट हियर वुड बी 70 lakhs ओडिशा रे जो मिशन नारी शक्ति हमर अछि दैट इज 70 lakhs 1 crore एठी देखि परिबो तो 1 crore असिस्टेड 83 lakhs SSG ग्रुप कैन यू इमेजिन तो लक्षपति दीदी कथा मध्ये तुम कहि परिबो 83 lakhs becomes the what लक्षपति दीदी हिजे देन अमृत काल में नैजबा दैट इज व्हाट हमर फोकस पॉइंट 5 रहिबो सो फोकस पॉइंट 5 रहबा अमृत काल स्ट्रेटजी फॉर द अमृत काल ऑब्वियसली तुम जानिछो सो अमृत काल दैट मींस अमृत काल रो हमें जाउछु वी आर मूविंग पासिंग थ्रू तो अमृत काल विल एंड 2047 रे अमृत काल खत्म हबो नाउ जो आम केबा माने आमको 75 वर्ष ठू नहीं कि 100 वर्ष जो पूरीबा ये जो 25 वर्ष को आम कहूँ अमृत काल ये जो अमृत काल ना अमृत काल रे आम कौन देखा कि कौन कर देश कौन कर अमृत काल आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हवा दरकार जो जीरो कमिटमेंट आम रखीचे कि बाय 2027 वी विल द जीरो नेट जीरो जो टार्गेट आम रखीचे ताकू आम अचीव कर देन वैलिडिटी आम कहीपर वी विल ऑल्सो बट आम कहीपर कि वैलिडिटी आम कहीपर कि आम केमती
कौन जो वैलिडिटी जो रही केमती आम वैलिडिटी ये कर ओके सो वैलिडिटी आम जब देखा कि बाय 2070 हेलो सदा मानस अच्छे कि क्योंकि मुझे क्लास अच्छे सो दैट मीन्स हम जब बजेट कथा कहबा कि बजेट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस लिटिल बिट सो दैट मीन्स वायबिलिटी गैप फाउंडिंग फॉर द विंड एनर्जी को आम केमती अच्छा आमर टार्गेट है कि बाय 2070 हाउ वी विल अचीव द जीरो बा कार्बन न्यूट्रलिटी दैट इज थ्रू द डिफरेंट पॉलिसी देखो ये तो गोटे पॉलिसी द्वारा हम ना डिफरेंट पॉलिसी हम केमिति विंड एनर्जी सीएनजी पीएनजी ब्लेंडिंग कथा नहीं जाओ बायोगैस कथा नहीं जाओ गोबर गैस कथा नहीं जाओ इथानल ब्लेंडिंग कथा नहीं जाओ तो ये जेते आमर अच्छी रूफटॉप सोलाराइजेशन पीएम सोलार योजना कथा दैट इज बट सूर्य शक्ति कथा नहीं जाओ ये भी कथा नहीं जाओ ये सब है गोटे टार्गेट आम पहुँचा कि हाँ 2070 नेट कार्बन न्यूट्रलिटी जोटा आम कहे दैट इज नॉट द सिंगल वे ट्राफिक आम कह कि वी नीड टू हैव दैट मल्टी वे व्हाट मल्टी वे अप्रोच वी मस्ट हैव इट सिंगल वे अप्रोच रही पारिबो नहीं ईवी व्हीकल्स कथा नहीं रूफ टॉप सोलाराइजेशन कथा नहीं जाओ ई बसेस कथा नहीं मेट्रो कथा नहीं जाओ ईवी पॉलिसी कथा नहीं जाओ इथानॉल पॉलिसी कथा नहीं न्यू स्कीम्स of that is the bio manufacturing and the bio that is what foundry to be launched to support the environmental friendly alternatives. So that is why that means hame khaiba let's say hame janti ethi dekho more than 10 crores LPG connection diachi PM उजाला योजना रे हमें खइबा उजाला मतलब उजला एटा उजाला देन हमें देखि पारो उजाला रे कोन आसबो दैट मींस 36.9 almost 37 LED bulbs crores of LED bulbs 27.2 lakhs LED bulbs tube light and 23.6 lakh energy efficiency fans distributed under the Ujala at Ujala. So these are the what under the Ujala. This is Ujala. Okay, PM Ujala and this is Ujala. Matlab light. So that means you can see these things like Ujala, and also 1.3 crores LED street light installed under the SNLP. So these are some of the data facts जो percentage increase the non-fossil fuels installed electricity capacity from the 30 to 43 gigawatt. Gigawatt तो टिके देखे no sorry percentage sorry. So that means हमें total हमें जो non-fossil fuels जो electricity production होची that has gone to 43.9 or I would say 44%. That means 44% as of now. By November 2023, we have achieved the installed capacity of the electricity from the non-fossil fuels. That is the great achievement I would say for the India. So now this will be gone off by 2047. Hope that would be 100%. Jodi 100% now at least 80% हो we are expecting that one. So that आमर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पारे देन स्ट्रेटेजी फॉर द अमृत काल ओके ये टूर हम देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट मध्य देखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन सा पीएम गति शक्ति समस्त जानते टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी दैट इज वेरी इंपोर्टेंट एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टू इम्प्रूव द व्हाट दैट मीन्स हमको जदि लॉजिस्टिक कॉस्ट गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर कैन इकोनॉमिक तेणु मेजर आम कह 3 मेजर railway corridor program under the PM Gati Shakti to improve the logistics and efficiency cost को हमें reduce मध्य करी परियो promotion of the foreign direct investment bilateral investment treaties द्वारा हमें ताको करी परिबा उड़ान स्कीम अच्छी comprehensive development of the airports रो संख्या बढ़ी बढ़ी जाउची no doubt railway accident जो महानगर होता that was heart raining incident and we can't मतलब ओडिशा पीपल खास करके मु कहबी कि बालेश्वर लोक ओडिशा लोक इंडिया लोक भूली पारबेनी दैट इंसिडेंट दैट एक्सीडेंट वाज सच ए सीवियर हार्ट रनिंग एक्सीडेंट वाज टुक प्लेस इन बालेश्वर तेणु ट्रेन को वी होप कि दैट विल आल्सो द सेफ्टी फीचर ऑफ द ट्रेन्स दैट विल आल्सो इंप्रूव द प्रमोशन ऑफ द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया द मेट्रो ट्रेल्स एंड नमो भारत सो दैट वुड बी आल्सो देयर नमो भारत सो मेट्रो ट्रेन जदि आमको रेल सॉरी
ତ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ସର ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ employment ମଧ୍ୟ ଆସିବ then increase in capital expenditure is increasing day by day and the year after year that is ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଇନ୍ ସो ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଟିକେ मतलब ରଖନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି those are the economists like they would be pretty happy with this data that the capital expenditure is increasing up. That means ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ capex. In short, we call it the capex. So capital expenditure with respect to the GDP is increasing. That is a good sign. तुमको सर कौन पे good sign? Because when your capex is increasing, that means you are creating more asset. You are creating more asset to your economy. You are putting more engagement. You are giving more engagement opportunity for the youngster. And the objective like the 5 trillion 7 trillion 10 trillion that will be also fulfills. So that means ame keba as we are now putting from tahale ame kahiba ame capex expenditure sethi pei kari paruche because multi property dimensional index ame improve karuche and multi property dimensionally those who are the poor their sankhya kami kami jauchi madhya ame dekhiche now they are some around as we are going through here what was there let me go through that one what was there yes it's now 11.3 so that is also important 11.3 capex is a good sign doubling fdi inflow so fdi inflow tame dekhi paribo now fdi inflow is now almost 600 usd billion as compared to 15 to 2014 रे जोटा थिला 290 तो ये मध्य बढ़ी बढ़ी जाउची इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आम नेशनल रेलवे तुम देख 2015 रु 2022 केते किलोमीटर बढ़ी ये तुम देख 14,44,634 ये तुम देखिपार सेमती लाइक कार्गो ट्राफिक एट मेजर पोर्ट्स ये मध्य बढ़ी कैपेसिटी हैंडलिंग बढ़ी इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट यार मध्य 50,000 क्रॉस कर बहुत इंपोर्टेंट डेटा 22,000 थिला नाउ इट्स 50,000 डबल हो जाइए डबल रु भी अधिक मध्य कहीपर एयरपोर्ट मूवमेंट इन मिलियन टन्स आम देखा दैट हैज ऑल्सो गॉन ऑफ डबल सब डबल डबल हो जाइए ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ थिला सब आम केबा यूपा टाइम रे तो सब ऑलमोस्ट डबल हो जाइए एयरपोर्ट मध्य तुम देखिपर ऑलमोस्ट डबल रु अधिक मध्य हो जाइए 149 एयरपोर्ट्स अच्छी इन द ईयर 2022 देन आम अमृत काल 3 को जिते आसवे इनक्लूसिव डेवलपमेंट कथा जो कहू इनक्लूसिव डेवलपमेंट मीनिंग हूँ कौन कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल है ना सो दैट आम कौन करें जमी मुझे तुमको कहती स्टार्टिंग रू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम कथा नहीं जाओ तो ये सब जो आसी जाऊँगी दैट वुड बी इंपोर्टेंट फॉर यू सो दैट आम जो ये सब इश्यूज को आम कहते लिखा ना रीजनल डिस्पारिटी केस तुम ये टॉपिक को लिखिपर when it comes to the paper 2 geography optional that is the what strategic plan for the regional plan जो हमें खोजे कि these are the regional plans you may say तो ये बहुत बढ़िया डेटा होची that means you can also use this data so like here you can see the 89% of the women registered for the antenatal care within the fast trimester the percentage of Amikaiba inclusive development in the aspirational districts 112 जो हमारे aspirational districts अच्छी तो से वुमेन्स मानक एंटीनेटाल केयर बढ़ी एंड द नंबर ऑफ एनरोलमेंट अंडर द पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना दैट हैज ऑल्सो गॉन अप टू 13,195 फ्रॉम 1,737 in 2018 that has also gone up the number that is प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना lakhs that is the what lakhs तो ये भी बहुत बढ़िया कथा पर लाख 1,000 हेल्थ कथा में देखिबा हेल्थ कथा जी आम देखा एनकरेज द व्हाट दैट इज स्कार्विकल कैंसर वैक्सीनेशन द गर्ल्स 9 to 14 years ये मध्य बढ़ी एनकरेज करा सक्षम आंगनबाड़ी पोषण to be expedite for the improvement of the nutrition delivery early childhood care and the development that means जहाँ को कहे तो अर्ली चाइल्डहुड जहाँ को ओके सेटा आमको बढ़ाया पड़ो जो अंगनवाड़ी दीदी मैंने अच्छा से सक्षम करा पड़ो मस्ट बी कैपेबल फॉर दैट एंड द पोषण too so that the early childhood must be their care is very important so that will save their future and mother as well mother will be also safe then tamara obviously you win platform for the that is what communication effort of the mission
immunization mission for the effort Indradhanush to be rolled out. So you win platform. This is very important. Immunization, that is co-win platform for the COVID time, and this is you win platform for the immunization. Like जो छोटे पिला मन को immune otherwise ताको missiles अब like जो आमे केबा मिसल वगैरह ये सब होचे ना सेति हमको एथर ध्यान दिया जावा दरकार. That is you win platform ये मध्य आमे टिके करा जाओ. Then health cover under the Ayushman Bharat scheme ताको मध्य करा जाओ. Okay, that would be extended to the all ASA Anganwadi workers. That would be health cover Ayushman Bharat scheme मध्ये कराଯିबो. Then अमृत काल 4 को हमें एसबा strategy number 4 अमृत काल रो inclusive development 2.2 housing. Obviously हम जानते PM आवास योजना that has gone off. That means in crores that we allocation करा देची 80,000 crores 79,000 crores थला तब 2023-24 रे किंतु ये that has gone off. तो ये प्रधानमंत्री आमे के जो ग्रामीण आवास योजना कथा कहूचे close achieving the target जो 3 crore houses थला additional 2 crore houses target in the next 5 years. तो हमारा that means हमें we are almost on the walls of to achieve that 3 crore houses. Additional जो 2 crores होगा, so that our target a total 5 crores रहेगा. And then housing for the middle class schemes to be launched for the promote of the middle class to buy and build their own houses. So housing for the middle class scheme भी गोटे आसी होची जो थे के मध्य हम कहि पारो जो थे मिडिल क्लास लोक नि जमन करो घर करिया पिन चाहिबे से माने मध्य लोन वगैरह नै कि से माने से स्कीम रे घर करि परिबे. ओके, टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव करिया पड़ो कना टूरिज्म सेक्टर बहुत सारा रिसोर्स हमर इको जोटा हम कहबे इको टूरिज्म है ना बा हमें यदि हम कहबे कि वी आर हैविंग वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस एंड opportunity that we need to harness that one. Tourism case रे देखिबा the state shall be encouraged to undertake the development of iconic tourist center जेते tourist center अछि ताको हमें कोन करबा ना ताको प्रमोट करबा ताउ मध्ये हम करबा. सो G20 मीटिंग रे हम कहैतला कि जोटा G20 समिट हेतला समस्त जन से 2023 रे 60 places presented diversity of India to the global audience मन को देखा जाइतला. Like the port communication तापई communication दरकार tourism infrastructure बढ़िया पड़ियो port connectivity बढ़िया पड़ियो amenities दवा पड़ियो island development जमते लाक्सेदीप कथा नहीं जाओ ये सब करा जाउची so that we will able to promote the tourism in the island मान करा जीवो and long term interest free loan दिया जीवो so that the state to encourage the developmental activities as well. तो ये मध्य हमें tourism को promote करे पे even prime minister नीचे मध्य जाइतले लाक्सेदीप and he was like footing barefoot से केमती डाइव करूथले ये सब देखि परिबो. सो दैट नाउ अमृत काल 5 out of 5 strategies हम देखो 5 जो strategies थला फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर. तो अमृत काल रो पंचम strategy about the fifth strategy for the अमृत काल is the I would say food processing agriculture and the food processing one. So here you can see the government will promote the private and the public investment in the post harvest activities. So the government will promote the private and public investment where the post harvest activities, because we are losing so much of the food in the post harvest because of the lack of the post harvest management. So we need to improve the post harvest management so that we will be able to what I mean able करी परिबा कि हमर जो that means how come कहबा कोन the post harvest जदि हम improve करी food security, so that would be food security and Namo DAP to be expanded to the all agro zone. And that Namo DAP means what? Obviously, this is fertilizer. This is what fertilizer. So that we are also having one target. You might have heard last time government PM Pranam scheme. So जेतरा हमें पढ़ुଥିଲେ last time it was having PM Pranam scheme. So तो दैट टाइम यदि आम देखा तो जोटा आम कहते कि दैट टाइम वी आर हैविंग बट जो आम एनकरेज करूँ कि PM प्रणाम स्कीम रे कि केमिति हाउ टू प्रोड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर को आम केमिति यूज करबा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को आम केमिति यूज करबा सेमती इफको रो जो आमर नैनो DAP अच्छी
सो इफको तुम जान इफको ताको नानो डीएपी करछि सो दैट ताको आम कहिबा जो नानो डीएपी रो एप्लीकेशन द्वारा कौन हम कि आम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई परिबा एंड जो नाइट्रोजन रही फस्फरस दरकार जो पोटासियम दरकार जहाँ दरकार ये सब प्लांट को मिल जाव एंड सस्टेनेबल भी आम कहे कौन सस्टेनेबल यहाँ आम कहे सस्टेनेबल कि नानो डीएपी रे कौन हम ना सस्टेनेबल यूज हो पार जो वेस्टेज था दैट वेस्टेज विल बी रिड्यूस sorry that wastage will be reduced then sorry आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान मध्य करा जाउची ऑयल सीड को केमते आत्मनिर्भर करबा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स फॉर द डेयरी डेवलपमेंट टू बी फॉर्मुलेटेड implementation of the प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना as well प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना ताकि जो मैंने फिश प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा डबल एक्सपोर्ट करें ये सब करें देन आम देखा कौन इनक्रीज इन द आलोकेशन फॉर द ब्लू रेवोल्यूशन तो ये तुम देखिपर केमती धीरे 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 ब्लू रेवोल्यूशन आम कहीपर कि इनकम और टोटल मनी विच इज कमिंग फ्रॉम द ब्लू इकोनॉमी दैट हैज गन अप शार्पली so here you can see how the increased allocation of the PM formalizations of the micro food processing enterprise scheme आधार मध्य आम फॉर्मलाइजेशन होची माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम कथा नहीं देन रेजिलिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी रो जति आम डिक्लाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट ना एम्प्लॉयमेंट रेट देख 3.2 जोटा कि 6.1 थिला ये थे सब बहुत लोग हल्ला मचाउଥିଲେ कि द मोदी गवर्नमेंट इज हैविंग अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर दैन द यूपा टाइम UPA 2 so now that has comes to the half जोटा हमर 2017-18 it was 6.1 थिला तार हाफ हो जाइए तुम देखिए 3.2 so almost half हम कहबा okay that is declining 3.2 unemployment this data is also very important तुम लिखि परिबो ना आमे देखिबा देन आमे CAD as compared to GDP अर्थात आमे कहबा that means ये मतलब डिक्लेयरिंग करंट अकाउंट डेफिसिट सो द करंट अकाउंट डेफिसिट टू द जीडीपी यदि हम देखो सी मतलब डिक्रीज होती ये भी बहुत बढ़िया कथा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत थिला 2023 2024 दैट मीन्स इज प्रोजेक्टेड दैट इट विल व्हाट डाउन हो ये भी बहुत बढ़िया कथा कि करंट अकाउंट डेफिसिट कमुची दैट मीन्स योर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल हाँ ना ये तो हवा कथा कि जदि तुम करंट अकाउंट डेफिसिट कमुची इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल तो दैट इज ऑल्सो देयर आउ जदि इकोनॉमी भल परफॉर्म करुच्ची अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम तो लिंक करदेव दैट मीन्स यदि इफ यू आर शोइंग इन द बजेट एट योर करंट अफेयर डेफिसिट दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट to the GDP is decreasing. If your CAD or the current account deficit is decreasing, that means economy is performing well. Where your economy is performing well, that means it might, or I would say मतलब might तमु कही परिमें it will lead to the decline in the unemployment rate को नहीं की जीवो obviously export मध्य बढ़ियो ताकू जेतो पुनी लिंक करबे export बढ़ी जीवो तमर economic activities आसबो your investment as we are also going through in the early phase of this मतलब ये टॉपिक जितरो डिस्कस करथले we are going through that capex expenditure is going on, that is also important. देन ग्रॉस एनपीएस कथा जति हम देखबा से मध्ये डिक्लाइन हे आसुचे ग्रॉस एनपीएस हम देखबा धीरे 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 3.2 बहुत बढ़िया कथा 3.2 ग्रॉस एनपीएस मध्ये हम देखबा दैट मींस ये मध्ये कम कमी जाउची ना डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ी जाउची डिजिटल ट्रांजैक्शन जति तमे देखिबो इन क्रोर्स दैट हैज इंक्रीज अप टू 15 crore ऑलमोस्ट हम के 14 crore 15 crores मतलब इट 100 crore सॉरी 4,000 8,000 12,000 14,000 crore डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत बढ़ी जाउची ये तुम देखिए ये तुम लिखिबा 16,000 crore आउ किसी दिन पर हिजबो एनपीए कमी जाउची कैपेक्स बढ़ी जाउची सो योर इकोनॉमी इज साइनिंग दैट मीन्स मु तो कभी इकोनॉमी इज साइनिंग फ्रॉम दिस डेटा सोर्स कि ये जो दी है ना अनएम्प्लॉयमेंट कमी जाउची करेंट अकाउंट डेफिसिट कमी जाउची कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ी जाउची डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ुची डिक्लाइनिंग इन व्हाट आम एनपीएस मध्ये कहि परबा राइज इन जीएसटी कलेक्शन तुम देखिबा जीएसटी कलेक्शन बढ़ी जाउची फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.5 जदि हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत मध्ये अधिक थिला केते 2014 रे देखो 9.4 थिला एंड दो ए टाइम रे हम देखबा 2023 ए जो 2 वर्ष 3 वर्ष इन्फ्लेशन बहुत थिला
and thank God at least inflation कमी आसी and we hope inflation target will be close to 4.5 तो 4.5 रहिले बहुत भल हबो we hope consumer will definitely hope for the मतलब आमे के least inflation as it could be जा हे परिबो we are also expecting so achievement of the taxation reform द्वारा कौन achieve हेची देखिबा direct tax collection more than आमे कहबा that is tripled in the last 10 years direct tax collection बहुत ही ज्यादा कलेक्शन बढ़ी तब देखिबा ट्रिपल the number of return जो IT return filers आमे कहबा that is the swells to 2.4 times IT return जो फाइल करूची fast refunds मध्ये बहुत जल्दी करा जाउची then आमे देखिबा average monthly gross GDP collection doubles 1.6 lakh crores एटा तो मो आज देखुतली शायद जनवरी हेची 1.7 point some 1.76 or 1 more than 1.7 lakhs crore तो बहुत बढ़िया जीएसटी कलेक्शन एबे होची हम देखबा टैक्स buoyancy मध्ये देखा होची ओके increase in the tax buoyancy of the state revenue as well the states मानकर जो जीएसटी हम देखा पोस्ट जीएसटी रिफॉर्म परे तांकर रेवेन्यू मध्ये बढ़ी जाउची बेनिफिट टू द कंज्यूमर को बेनिफिट आसुची आगु मध्ये मिलिबो सो टैक्स buoyancy अर्थात आमे कहबा जो मतलब चेंज इन आमे कहबा तो टैक्स buoyancy अर्थात कोन दैट मींस कलेक्शन ऑफ टैक्स इन विथ रेस्पेक्ट टू जीडीपी सिंपल आमे कहबा कलेक्शन ऑफ टैक्स विथ रेस्पेक्ट टू जीडीपी हैज गॉन अप दैट इज द टैक्स buoyancy द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कोन जीएसटी पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होची बहुत बढ़िया 94% इंडस्ट्री that is what leases views the transaction in to the GST as largely positive कोची 80% that is the what respondent feels GST has led to the supply chains optimization ये बहुत बढ़िया that means positive signs from the economics different sectors decline in import release time जो import release time to decrease that means हम के भाई जो हमारा शिपिंग इंडस्ट्री ताले बहुत बढ़िया परफॉर्म करूची 47% of the inland container depot decline हेची हम देखिबा से कोची that means decline in import release time मध्ये हेची काना टर्न अराउंड टाइम टा टिके बढ़ाइबा को पड़िबो हमको 28% एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स and 27% in the seaport ताले में decline in import release time अर्थात आमे जो केते जल्दी आमे गोटे जहाज को मतलब कारबार करिबा सपोज गोटे पोर्ट अछि भाबो जो टर्न अराउंड टाइम टा ना अधिक न हवा दरकार ताको जल्दी छाड़ दियो ओके सो दैट आमे फ्रीक्वेंसी बढ़ी जाओ द टैक्स प्रपोजल कोन सो जस्ट अ मिनिट So tax proposal case रे जदि हम देखिबा so continuity in the taxation रे देखिबा taxation जहाँ अछि ताको कंटिन्यू करिबा बस एतिकी विड्रॉल ऑफ द आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड ठीक अछि ये मध्ये हम देखि परिबा अच्छा जा भी हो देन रुपीस कम्स एंड गोस एटा को हम देखि देबा ना हमरो जो 1 रुपीस कम्स एंड गोस दैट वुड बी बहुत बढ़िया ये तमरो बहुत ही बढ़िया चार्ट सब बोले देथे एंड आई लाइक दिस चार्ट मते बहुत पर्सनली कि ये गोटे जोटा कि 1 रुपी कम्स एंड गोस दिस इज वेरी इंपोर्टेंट चार्ट पाई चार्ट ना देखे इनकम टैक्स टोटल आमर जी टोटल भाव बजेट आम जोटा कि कहे बजेट को दी भाग कराई रेवेन्यू बजेट कैपिटल बजेट होता है ना रेवेन्यू साइड रे देखी था ना देख इनकम टैक्स रे केते परसेंट 19% अच्छे एक्साइज यूनियन 5% कॉर्पोरेशन 17% आसूची सब अधिक कि होची दैट मींस दैट इन द बोरोइंग एंड लिएबिलिटीज 28% दैट मींस बोरोइंग लिएबिलिटीज आसूची 28% सो मैक्सिमम रुपीज आसूची हमर जहाँ खर्च करूचे आज आम देश रे दैट इज ताल मैक्सिमम से लिएबिलिटीज केते 28% नॉन टैक्स रिसिपेंट 7% non debt capital receipt 1% only and I hope that will increase a 1% टिके बढ़ी जाऊ and this will decrease and let it to increase customs हम देखबा 4% तो custom रो 4% आसुची GST 18% so GST is 18% that is very important GST and income tax the income tax सबटो अधिक आसुची GST कम income tax अधिक सबटो this is very important कने ये prelim रे तुमको क्रॉस कर दे पारे
रंग हो जापे दैट मीन्स आमर जो इनकम सब अधिक आसूँ कौटी इनकम टैक्स अधिक आसूँ रादर देन द जीएसटी इज सेकेंड तो फास्ट किए लिएबिलिटी इज बोरोइंग देन इनकम टैक्स देन जीएसटी देन आसो कॉर्पोरेशन टैक्स ये तीन चार्टा टी मन रखिए तापर रुपीज गोज आम देखिए रुपीज एक्सपेंडिचर जो आम स्पेंड करुचे केमती सो स्पेंडिंग सब अधिक कौटी जाऊँगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स तो सब अधिक आम देखा सॉरी तो दैट इज व्हाट इंटरेस्ट पेमेंट तो सब अधिक जाऊँगी कौटू ना इंटरेस्ट पेमेंट तुमको सर कौन पे इंटरेस्ट पेमेंट जाऊँगी बिकज हियर यू आर हैविंग द 28% लिएबिलिटीज दैट इज व्हाई ओके देन आम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रे दौचे क्या आम वेलफेयर अप्रोच होचे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम सॉरी ठीक मत करेक्ट कर दियो ताले फास्ट किए आसीबो ना इंटरेस्ट पेमेंट सब हाईएस्ट सेकंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम थर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स रे जाउची आम देखा ये भी बहुत ह्यूज अमाउंट जाऊँगी देन डिफेन्स रे 8% जाऊँगी सब्सिडीज रे 6% दिस इज वेरी इंपोर्टेंट डिफेन्स सब्सिडीज जैसे आमर स्कीम्स वगैरह रहा ये सब जानी कौन कौन एलेट से स्टेट शेयर से उनको टैक्स ड्यूटीज जाऊँगी अदर एक्सपेंडिचर अच्छी पेंशन 4% जाऊँगी फिनान्स कमिशन जो ट्रांसफर करेंगे 8% करुँची तो ये जो गवर्नमेंट खर्च आम जानवा दरकार कि गवर्नमेंट जो 1 रुपीज को केमती खर्च करुँची ओके तो ये 1 रुपीज केमती आसूची आउट सिंगल रुपीज केमती जाऊँगी आम तार देखिले तो खर्च जदि आम देखा इंटरेस्ट पेमेंट 20% जाऊँगी 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स रे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड रे 8% देन सब्सिडीज टिके मन रखो 6% सब्सिडीज जाऊँगी ये भी गोटे बहुत बड़ा अमाउंट 6% मध्यम देखा ओके सो दीज आर देयर देन आम आलोकेशन देखा डिफरेंट को मिनिस्ट्री को केते आलोकेशन है डिफेन्स मिनिस्टर को केते आलोकेशन इन लाख्स क्रोर 6.2 लाख क्रोर डिफेन्स को दिखाई आज यूचाल सब हाई रखा जाए डिफेन्स फॉलोड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन ये तुम देखिपर दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड 2.78 रेलवे 2.55 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 2.13 crores lakh crores home 2.03 1.7 Ministry of Rural Development 1.68 crore for the chemical and fertilizer 1.37 for the communication 1.27 for the agriculture and welfare so these are the total that means in lakhs crores so defense is on the high at the as usual so defense expenditure बढ़ी बढ़ी जाऊँगी मध्य आम देखा ये सब आज usual थाए allocation to the major schemes वगैरह हमें देखी देबा allocation into major schemes I mean crores देखा सब अधिक कहे द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना दैट इज द आम जहाँ कहे एमजी नरेगा ये जो नरेगा स्कीम जहाँ आम कहे दैट मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जहाँ आम कहे ये आमको देखा दैट मीन्स धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी पाँच के 86,000 crore दिया जाए दैट वाज द 60,000 crores in the year 2023-2024 that has gone up आयुष्मान भारत स्कीम दैट मीन्स एथरे मध्य देखा 7,500 crores है ना ये तो दिखाई टॉप स्कीम्स जोटा आम कहे देन प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्स आम जहाँ को आम कहे ये 46,200 crores ये बहुत इंपोर्टेंट ताकि आम प्रोडक्शन बढ़ू modified program for the development of the semiconductor industry and display manufacturing system national green hydrogen mission 6,600 crore solar power grid 8,500 so energy sector को मध्य then receipt and expenditure so receipt revenue receipts जदि हमें देखा has gone up to 30 lakhs crore that is revenue expenditure होची देखिए capital receipt हम देखिबा that is 17.6 lakhs crore ताले आमरो कोन रेवेन्यू रिसीप्ट अधिक कैपिटल रिसीप्ट कम तो रेवेन्यू रिसीप्ट जदि अधिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मते अधिक ओके तो देन आसबा हमें देखिबा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो केते 36 जो कथा मो कहते जदि ताले रेवेन्यू डेफिसिट एठु जना पड़ जिवो 30 लाख क्रोर आसुची ताले 36 पॉइंट दैट मींस हम कहबा 6.5 लाख क्रोर होची डेफिसिट तो सेमती हमें कैपिटल रिसीप्ट तुम देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होची 15 लाख क्रोर कैपिटल रिसीप्ट होची 17.6 crore so that there is no deficiency by deficit नहीं so this is all about हमें केवल पूरा बजट जो हमरो सर्वे हमें जो देखी थले ओके जो हमरो बजट जो आसी छी हमरो समरी ऑफ द बजट को हमें देखी थले
And with this, I will once again congratulate everyone, those who are writing this time OPSC means the Manaku, and hope this features जहाँ हमें पढ़िले जो तुम डेटास फैक्ट्स पढ़ले तुमको मेंस रे एंड जो मैंने प्रीलिम दबो तुमको मध्य आसीबो एसी रे आसीबो with this I will conclude the session. Thank you everyone. Don't forget to subscribe, like and share to our channel. Thank you everyone. Have a good day to all.